Good morning, everyone. Welcome to the session. I hope I'm live now. Yeah. Hello, all. Welcome to this session on XAT Algebra Questions for 2023. And we have been doing the XAT QA series on the PYQs because it is important to solve previous year questions before any exam. Okay, any exam, not just these management tests. Any entrance exam you will be giving, it is extremely important to solve previous year questions to get an idea what the exam is all about. So in that QA series, we are taking all the previous year questions. So if you haven't watched, do watch the previous sessions. You can find them on this channel. If you're new to the channel, just go to the videos list and you can check out that previous year questions. Yeah, that QA 2023. You will get my videos only, and dekh lena. And I'll be continuing with that series also. But this is just to like take a few algebra questions specifically. Okay, it's not a long session, small session. I'll take it in parts again. Algebra ho gaya, geometry ho gaya, the important topics in my opinion. I'm not saying it's absolute and same thing is going to happen this year, but the things that I feel in my opinion or in my experience is important. I'll be taking you through those questions like in these sessions. So people new to the session, do subscribe to the channel and like the session before we start. And people who have joined live, good morning everyone. Do like the session. This is just a brief background of mine, and not long back I was at your place. So whatever things I'm just saying is something I have gone through myself, done myself. So I feel like that will definitely help you. So I try and advise and instruct the same things in my sessions. And we have a foundation test today, Unacademy 2023 foundation test. We have it today, December 11th. Ko. Yesterday and day before yesterday, there were these marathons that were conducted. And then next UCFT hoga 16th 17th marathon ke baad on 18th. Okay, so very useful test for 2023 aspirants. Okay, you get exciting rewards and scholarships and everything on your subscription. So do participate जो लोग 2023 के देख रहे होगे. Okay, तो ये वो मैराथन का जो चल रहा था yesterday and day before yesterday. So I have 3 questions today. Let us start with this first question. Welcome everyone. Hope I am clearly visible to everyone. Quadratic polynomial. I'll just pause for 30 seconds. If you have any answers, do let me know your answer. Very easy question, nothing difficult. Just try this. Two different quadratic equations have a common root. They have a common root. And let 3 unique roots of the two equations A, B and C. These are, let us say, the 3 unique roots. And all of them are positive integers. If A plus B plus C is equal to 41, then what is the other root? Very simple question. I'll just wait for 30 seconds. Product of the roots of one of the equations is 35. Positive integers 35. This is your clue. Which of the following options is definitely correct? Let's try and evaluate. Write your answer in the comment section. We'll anyways discuss this. Just waiting for 30 seconds. If you would have solved this already, yeah, be solved करके बताओ. Not very difficult. Not very difficult. Just the arrangement. Possible combination सोचना है. मुझे दो चीजें दिया गया है यहाँ पे. That 3 of the roots. Okay, 3 unique roots. A plus B plus C is equal to 41. 3 unique roots. तो मेरे जो roots हैं, it might be something like this. 3 unique roots A, B, C. And एक root common है इसमें. ठीक है. One of the roots is common. Maybe A is repeated twice, या B is repeated twice, या C is repeated twice. But 3 values है. मतलब maybe the roots are like this.
A B C, वैसे हो सकता है। तो एक इक्वेशन का रूट ए बी होगा और एक इक्वेशन का रूट ए सी होगा। क्वाड्रेटिक है तो दो दो रूट्स, तो मे बी लेट अस से इट इज ए बी एंड ए सी, तो ए इज द कॉमन रूट। समझ रहे हो? इट द क्वेश्चन इज लाइक दैट, बिकॉज क्वाड्रेटिक इक्वेशन विल हैव टू रूट्स एंड देयर आर टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बट दे हैव अ कॉमन रूट, तो वन ऑफ द रूट्स इज सेम। बट वैसे देखा जाएगा तो टू इक्वेशंस के चार रूट्स आने चाहिए थे, बिकॉज देयर इज अ कॉमन रूट, सो बेसिकली वी हैव थ्री यूनिक वैल्यूज, so those unique values are a b and c, and all these a b and c are positive integers. This information is also very important. तो a plus b plus c 41 है, एंड ऊपर से बोल रहा है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ वन ऑफ द इक्वेशन। लेट अस से मैं ये ले लेता हूँ a इंटू बी, यू कैन टेक a इंटू सी ऑल्सो, डजेंट मैटर, किसी का वैल्यू तो पता ही नहीं है, तुम जिसको जो भी लो। वैसे तो कुछ a b c लेस देन b लेस देन c वैसे तो कुछ बोला नहीं है, तो एनीथिंग यू टेक। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ एनी टू इक्वेशंस, मान लो एक इक्वेशन के रूट्स a एंड b हैं, तो उनका प्रोडक्ट इज 35। नाउ a एंड b बीइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इज 35, in what way can you do this? I can write it as 1 into 35, this is a possibility। एक root 1 हो गया and the second root is 35, or maybe I can write it as 5 into 7। There's no third way, these are the two ways you can write। अगर तुम a को 1 b को 35 ले रहे हो, so that means c is coming as 5, क्योंकि sum 41 आना चाहिए, and in this case if I'm taking a as 5 and b as 7, in that case c is 29। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली करेक्ट? ये दो केसेस पॉसिबल है, एंड तुम देखो दोनों केसेस में c5 आ रहा है, यहाँ पे a5 आ रहा है, दैट मीन्स वन ऑफ द रूट्स इज 5 इन ईच केस। तो वहीं से क्लियर है दैट वन ऑफ द रूट्स इज 5। कॉमन रूट इज 29, डेफिनेटली नॉट, ये एक केस में रूट 29 आएगा, कॉमन रूट 29 आएगा, वी डोंट नो दैट। द स्मॉलेस्ट अमॉन्ग्स द रूट्स इज 1, अगेन वी आर नॉट श्योर, ठीक है, अगेन वी आर नॉट श्योर, इट कैन बी 5 ऑल्सो, वी कैन नॉट से। डेफिनेटली करेक्ट तो यही आएगा, क्योंकि ये दिख ही रहा है 5 इज डेफिनेटली वन ऑफ द रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द अदर इक्वेशन इज 5, वी डोंट नो, कुछ भी हो सकता है वहां पे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 5 तो डेफिनेटली आ नहीं रहा है, अगर मैं ये एक सेट ऑफ रूट्स ले रहा हूँ एंड और एक ले रहा हूँ, 5 तो कभी आएगा नहीं। ओके, all of the above are possible but none are definitely correct। No, one of the roots is 5 is definitely correct, this part, ठीक है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ सोचना नहीं है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। जस्ट जो 35 नंबर दिया था एंड 41 नंबर दिया था, वही दोनों चीज को यूज करके हमने सॉल्व कर लिया, नथिंग एल्स। ओके, वी डोंट नीड टू अज्यूम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, फिर वहां पे 6 वेरिएबल्स बना के, नो नीड टू कॉम्प्लिकेटेड एट ऑल, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। So hope this is clear। तो when you are studying quadratic polynomials, तो quadratic polynomials में CAT में तो ऑलरेडी ये तुम लोग पढ़े होगे quadratic polynomials, बट फर्स्ट रूट्स कैसे निकालते हैं, रूट्स एंड रिलेशन, you have to know this, how to find the roots, and then factorization, because factorization को लेके बहुत से क्वेश्चंस आते हैं quadratic polynomials में। नेचर ऑफ रूट्स, डिस्क्रिमिनेंट एंड ऑल, उसको लेके क्वेश्चन आते हैं, नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है। ग्राफ बेस्ड क्वेश्चंस ऑन का quadratic polynomial, graph based questions, and then maximum minima। So quadratic polynomials, you can see questions in these 5 categories। Okay, you can see questions in these 5 categories, so try and cover all these। अगर पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है, if you are confident on this, if not just revise these things, roots and how to find the roots, what's the relation between the roots, factorization, how do you factorize a quadratic polynomial, and उसका related जो questions है, nature of roots related questions, how do you know the nature of roots using discriminant, and then graph based questions, beautiful graph based questions are there on quadratic polynomials, and then maxima minima of a quadratic polynomial। Okay, these are the 5 touch points in case of quadratic polynomials, and definitely you should learn all these if you want to like give yourself the maximum chance of solving the question in the exam। Good morning, Yash। So let us go to a series question। Series question, try this one।
आई जस्ट वेट फॉर अ फ्यू सेकेंड्स। देख लो क्वेश्चन क्या है। बेसिकली ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है यहाँ पे। कंसीडर द सेट, दिस इज अ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ये जो सेट है, मान लो सेट एस वन, आई राइट इट एज 3 to the power 0, then 3 to the power 1, then 3 to the power 2, then 3 to the power 3, and it goes on till 3 to the power 100. So I can basically say this is a geometric progression. How many terms? Number of terms 0 से 1, 101 terms. Okay. I'll have to find the ratio. किसका ratio? Last number and the sum of the remaining numbers. What is the last number? Last number is 3 to the power 100. So sum of the remaining कितना आएगा? Remaining मतलब बाकी सारे numbers. So this again forms a GP and it goes on till 3 to the power 99. So this GP has 100 terms now क्योंकि एक term हमने निकाल लिया. So what is the sum? First term A, then R. Common ratio यहाँ पे क्या है? A मतलब GP का जो sum होता है. How do you calculate the sum of a GP? S is A R to the power n minus 1 by R minus 1, फाइनाइट GP का sum. ठीक है, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है. फाइनाइट GP का सम निकालते हैं बस इसी फॉर्मूला में. डायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज करना है. यहाँ पे फर्स्ट टर्म तुम्हारा क्या आ गया? फर्स्ट टर्म 3 to the power 0 है and the common ratio is 3 and number of terms is 100. 3 to the power 100 minus 1 by 3 minus 1. So basically it is, ये तो 1 है, so I get 3 to the power 100 minus 1 by 2. So I'll have to find the ratio of this and this. उतना ही बस करना है. Easy question. So if I have to calculate the ratio of the last term, that is 3 to the power 100 to the ratio of this sum of the remaining terms. So I get 2 into 3 to the power 100 by 3 to the power 100 minus 1. Now basically I can say these two are consecutive terms, isn't it? Consecutive नहीं होगा. 3 to the power 100 and 3 to the power minus 100 minus 1 are consecutive terms. Look at a pattern in case of consecutive terms. ठीक है. Suppose I'll write 10 by 9. इसका वैल्यू कितना आता है? 1.111. ठीक है, मैं थोड़ा सा ऊपर जाता हूँ 10 by 9 ना करके. सपोज आई टेक 100 by 99. लेट अस से 100 by 99 इज 1.1 रह गया तो 0, 10 आ गया बट नहीं होगा, 100 हो गया. फिर से 1.01, 01, 01 एंड सो. सपोज आई टेक 200 by 199 तो इट इज 1.1 रहा, 0 नहीं होगा कुछ उसमें. तो और एक 0 पुट करोगे 1000 हुआ, तभी जाके मैं 199 into 5 कर सकता हूँ मे बी. So look at this. In every case, numerator by denominator, I have taken consecutive terms only. Denominator is 1 less than the numerator. But what is the pattern? It's a decreasing trend, isn't it? मतलब तुम जितना हायर नंबर में जा रहे हो उतना धीरे धीरे वो जो वैल्यू है it tends towards 1. The value tends towards 1. It cannot be 1 obviously because they are not same, but it tends towards 1. पहले 1.11 दिखा, फिर देखो 1.01, फिर 1.005, फिर 1.000. It tends towards 1. So you go higher numbers, it tends towards 1. Now 3 to the power 100, imagine how big this number is. So this value, it is almost 1. Almost 1. That means my overall value is almost equal to 2. अब exact value तो नहीं निकाल सकते. Also looking at the options, this gives you the clue. Options में जब तुम देखोगे सारे होल नंबर्स ही है, तो आई विल गो विद दिस 2. बेसिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का सीरीज बेस्ड क्वेश्चन. तो जब भी तुम ये सीरीज पढ़ रहे हो, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो दीज आर द फ्यू थिंग्स. जीपी एंड एपी का सम एंड जनरल टर्म, ओके, कवर दीज थिंग्स. इनफाइनाइट जीपी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इनफाइनाइट जीपी बेस्ड क्वेश्चंस डेफिनेटली इससे कवर करना है, इनफाइनाइट जीपी. एंड देन थर्ड में सीरीज के सम 30+ क्वेश्चंस कर लो. ओके, सीरीज का वैसे कोई डेफिनेट लाइक बाउंड्री नहीं, ये करो वो नहीं करो.
सीरीज में कुछ भी पूछा जा सकता है. एंड मे बी यू कैन एक्सपेक्ट सम अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्वेश्चन. मैं आगे वाले सेशंस में करूंगा जैसे भी हो इसको. अरिथमेटिक और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, एजीपी सीरीज, जहाँ पे एपी भी है जीपी भी है, दोज काइंड ऑफ क्वेश्चन. ठीक है, थोड़ा ये एरियाज में नॉट मच टाइम. ओके, जस्ट सिट फॉर वन डे एंड जस्ट एक्सप्लोर दिस, बिकॉज एपी जीपी तुमने ऑलरेडी पढ़ा होगा कैट के लिए. इफ नॉट ऑल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट चैप्टर टू स्टडी, but then try and see different varieties of questions that have been asked. Have a tendency to solve good questions. Please don't be afraid of a question once it gets complicated. Try and understand the solution, or we are always there to help you out. But then willingly you will have to make an effort to understand. If you don't do that, then you are always running away from absolute understanding of a topic. Absolute understanding भी wrong word हो जाएगा बोलने के लिए. But if we don't solve good questions, our like understanding will not enhance. And then how will we be sure that एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आएगा जो हम कर सकते हैं. तो इट्स लाइक मेकिंग अ गैम्बल दैट जो मैं करके गया हूँ वही आएगा, विच इज नॉट ऑलवेज ट्रू. तो इफ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम जहाँ पे वट एवर कम्स आई हैव टू सॉल्व दैट इन द एग्जाम इटसेल्फ, आई हैव जीरो क्लू किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे. मे बी ऑल क्वेश्चन आर लाइक कंप्लीटली न्यू क्वेश्चन, आई हैव जीरो आइडिया अबाउट दैट. हाउ डू यू डील इन दैट काइंड ऑफ अ सिचुएशन. तो एग्जैक्टली तुम प्रिपेयर क्या कर रहे हो. So the selection of questions beforehand is foolishness. So you prepare everything, everything. Do not prioritize कि यहाँ से आएगा वहाँ से नहीं आएगा. Yes, sometimes out of experience we say इस चैप्टर से कम क्वेश्चन आएगा, उससे ज़्यादा आएगा. But it's like looking at the trend. But as candidates, because I was also a student at one point, so I'll say the best chance you are giving to yourself is when you are ready with all chapters. Maybe some chapters you are not very strong at, some chapters will be a little weak, but you should know all the chapters. You should know all the chapters. Only then you are at the highest possible. You're giving yourself the highest possibility of cracking the exam. नहीं तो यू आर गोइंग द एग्जाम क्रिपल्ड. आधे चीजें तुम्हें पता नहीं है, आधे चीजें में तुम स्ट्रांग नहीं हो, सम चैप्टर्स यू डोंट लाइक. प्लीज डोंट डू दैट. आई से दिस इन एवरी सेशन. एंड जो लोग कैट में ये मिस्टेक कर चुके होगे, यू कैन डेफिनेटली रिलेट टू व्हाट आई एम सेइंग, बिकॉज योर सिलेक्शन ओनली वर्क्स इफ आई एम गुड इन ऑल चैप्टर्स. क्योंकि आफ्टर द एग्जाम इफ आई एनालाइज एंड टेल यू ये 11 क्वेश्चन अरिथमेटिक से थे, तुम कर लेने चाहिए थे इसको, तो दैट साउंड्स वेरी इजी, बट दैट्स नॉट हाउ प्रैक्टिकली इट इज डन इन द एग्जाम. And it's not possible also वैसे करना. That is why you have to be good in all chapters. Then in the exam identify कि अच्छा चलो ये नहीं करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लगेगा, मे बी आई सॉल्व दिस. वो चैप्टर ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग एरिया है नहीं, बट वहाँ से बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो लेट मी डू दैट. तो वी कैन ऑलवेज ट्राई एंड गो इन दैट अप्रोच. ठीक है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ फंक्शन क्वेश्चन. ट्राई दिस वन. F is a function in which f of 1 is 1 and f of x, just a second, let me check. F of x is 2x plus f of x minus 1. F of x is 2x plus f of x minus 1, and we have been given f of 1 is equal to 1. We have to find what is f of 31. So in these kind of questions the trick is to just find out a few values. f of 1 दिया है तो तुम f of 2, f of 3, f of 4 ऐसे थोड़े निकाल के देखो कितना आ रहा है. बस उतना ही है, सिंपल. जस्ट कैलकुलेट अ फ्यू वैल्यूज, यू विल गेट द पैटर्न. नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन एट ऑल. फंक्शन का ये सब पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन है. जस्ट कैलकुलेट अ फ्यू वैल्यूज. f of 1 दिया है तो लेट अस कैलकुलेट f of 2. हाउ मच विल बी f of 2. तो x की जगह मैंने 2 पुट किया यहाँ पे, तो इट इज 2 into 2 plus f of 2 minus 1 which is f of 1. So 4 plus f of 1 is 1, so I get 5. Then f of 3, x को 3 पुट किए, so 2 into 3 plus f of 3 minus 1 which is f of 2. So 6 plus 5 we get 11. Then f of 4, x को 4 पुट किए, so 2 into 4 plus f of 4 minus 1 which is f of 3, 8 plus 11.
I get 19. Now comes the tricky part. यहाँ पे थोड़ा सा ये पैटर्न ऑब्जर्व करना इज अ लिटिल चैलेंजिंग. तो ये 1, ठीक है, ये f of 1 is 1, f of 2 is 5. Now 1, if I write it as 1 square plus 0, 5 I'll write it as 2 square plus 1, 11 I'll write it as 3 square plus 2, 19 I'll write it as 4 square plus 3. Can you see the pattern now? Basically I get this: f of n is n square plus n minus 1. f of n is n square plus n minus 1. जो भी इनपुट है उसका स्क्वायर प्लस इट्स प्रेडिसेसर. So in that case, f of 31 is like 31 square plus 30. 31 square is 961 plus 30. We get 991. Pattern based question. There is no fixed way of solving such questions, obviously. There is no fixed way of solving such things because every question has a different function definition and the approach will be again different for that. So that is what depends on the question. So जैसे जैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, I just said the best method to solve this. f of 1 दिया है, f of 31 long way, 1 से 31 directly relate नहीं कर सकते. Let's try and find out f2 3 4 क्या है, then let us think, because without doing that you cannot think. You have to calculate f of 2, f of 3, f of 4, f of 5, then maybe try and see okay कुछ similarities आ रहे हैं क्या in the pattern, and then automatically बन जाता है maximum times. पहले से तुम लोग फंक्शन से क्वेश्चन किए भी होंगे in your CAT preparation. So once you calculate this only, then you will understand कि अच्छा चलो मे बी ये हो रहा है. That's the best way to approach these questions. ठीक है. तो फंक्शंस का अगेन फॉर दिस कैट एग्जाम, कैट बोल रहा हूँ जैट एग्जाम के लिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन थोड़ा देख लेना. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एंड इट्स टाइप्स. ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन. इस बार तो अच्छे से मॉडुलस फंक्शन क्वेश्चंस आ गए थे एग्जाम्स में. मॉडुलस फंक्शन देख लेना. लॉग तो इम्पोर्टेंट है ही. लॉगरिथम्स थोड़ा देख लेना. ये जो पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन फंक्शंस के हैं, पैटर्न बेस्ड क्वेश्चंस, एंड ये जो ऑन टू फंक्शन 1 to 1, इसका बेसिक्स थोड़ा देख लेना. बाइजेक्टिव, these things, composite functions and iterative functions, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, फंक्शंस के लिए. these are the touch points. जब रिवीजन कर रहा हो फंक्शंस का, try and see these questions. I'll take one full marathon session on only algebra questions going ahead. Don't worry about that. बट अभी के लिए just try and revise this concept. अगर इसमें से कोई भी टॉपिक तुम्हारा छूट गया, थोड़ा उसका like बेसिक्स पढ़ लो. वेरी लाइक इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है. अंडरस्टैंड द बेसिक, सॉल्व सम गुड क्वेश्चंस एंड देन सी एग्जाम में क्या होता है. बट नॉट रीडिंग द चैप्टर एट ऑल, दैट्स नॉट करेक्ट. ठीक है. तो ये क्वेश्चन रहा. दिस इज योर होमवर्क. आई वांट ऑल ऑफ यू टू ट्राई दिस and do let me know your answer in the comment section once the video ends. You solve this question, let me know your answer in the comment section and I'll solve this in the coming session. ठीक है. All of you who are attending live, इस question को solve करना. Do write your answer in the comment section and let's discuss it over there. ठीक है. Not in this live chat. वीडियो का comment जो आएगा वहां पे लिखना आंसर. ठीक है. So just a quick announcement before we end this session. कैट का गोल स्कोरर बैच दिसंबर 15 को स्टार्ट हो रहा है. सो दीज आर द यूएसपीज ऑफ द बैच 2023 के लिए. सो डू पार्टिसिपेट इन टुडेज टेस्ट एंड देन जॉइन दिस बैच इफ यू आर 2023 एस्पिरेंट. एंड जो लोग IIFT, ZAT एंड CMAT अदर मैनेजमेंट एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, रिसेंटली एक बैच स्टार्ट हुआ, यू कैन जॉइन दिस. डू यूज माई कोड DASLive and you will get a 10% discount on your subscription. And these are the plus and iconic subscription plans. So depending on your requirement, you decide which one suits you more and take the subscription and start learning on the Unacademy platform. You'll get my profile link on the description of the video. So you can follow my profile on the Unacademy app or let's say website जो भी तुम use करोगे. And you can attend all my free special classes, and also if you're taking a subscription, you can join me for my plus courses. So thank you once again from my end for joining.
Hope you guys like the session. Do like the session, subscribe, and share it with your friends who are also preparing for the exam. We'll meet again in another session very soon. Till then, have a nice day. Keep studying, keep learning. Thank you.